university the very first time. Can't you feel you guys are the same individual who was so confused back in time? But now, look at you. You are confident with these caps on your heads. You are proud. You are happy for what you are today. My lovely fellows, it's just the beginning. My lovely fellows, no matter what you have achieved so far, let's crave for more. And let's not forget the words of Steve Jobs: stay hungry, stay foolish. Just like the time we used to fight on assignments and calling each other padhakus. Remember that sharing a fruit chat at the canteen and asking uncle to put more masala in it? Oh my God, look at the structure of this beautiful building. The smell of coffee from the corner of the cafeteria. The fragrance of the yummy fries with the touch of an extra sauce. Oh God, I wish we can relive it all. My cute stubborn buddies, let's just take a moment to thank our beautiful families out there. Our parents, what beautiful souls they are. They invested all of their love and energy and money on us to make us receive these degrees with dignity and pride. Today, I feel like screaming out louder that I'm a sister of 5 brothers, my brothers who are my pillars, who never treated me like a sister but a daughter. कौन कहता है कि सिर्फ बहनें ही आपका सर फख्र से बुलंद करती हैं? आप सब ने तो भाई होकर भी हमेशा मेरा मर्तबा बुलंद किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब मुझे क़िरत के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे भाई मुझे मान कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उनके लिए मैं उनका मान हूँ। लोगों के लिए पेरेंट्स सबसे पहले आते हैं, लेकिन मैं अपनी अम्मी का जिक्र सबसे आखिर में करूँगी, क्योंकि एक यही तो हस्ती है जो हर गम में भी मेरे साथ हंसती है, ज़िंदगी के हर फैसले में मुझे साबित कदम रहना सिखाती है। माय प्यारी मामा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द बेस्ट राइटर। आपने अपने लफ्ज़ों की अदायगी से मेरे लफ्ज़ों की अदायगी को और बेहतर बनाया। So when anyone say I communicate well, it's just because of this gorgeous lady sitting out there